So number third पे है difference, the view. The view is utilized to query certain information which is contained in a few distinct tables. तो फिर table में क्या है? The table holds fundamental client information and holds cases of a characterized object. Then fourth difference is, in the view you will get frequently queried information. और table में क्या है? In the table, changing the information in the database likewise changes the information appeared in the view. Question number 6 है, explain entities, attributes and relationships with one example of each. तो इन सब टर्म्स को हमने एक्सप्लेन करना है. तो पहले है एट्रीब्यूट्स क्या है. एट्रीब्यूट को फील्ड कहते हैं. ठीक है, जिस तरह डिफरेंट कॉलम होते हैं टेबल के अंदर, जितने कॉलम है डिफरेंट, वो सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं या फील्ड्स हैं. फील्ड, इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट इन अ डेटाबेस. इट इज वेयर द एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड ड्यूरिंग डाटा एंट्री. All data fields in the same table have unique names. Fields are also called attributes or columns. Multiple fields make up a data record. Several data records make up a data table, and several data tables make up a database. Question number 6 का next जो पूछा हुआ entity. ठीक है, attribute बता दिया, entity क्या है. In literal sense, an entity is an individual object which has its own qualities and properties. यानी अपना वजूद, existence, particular existence. In database terms, an entity is an independent table and its fields are known as attributes. यानी एक जो टेबल बनाया जाता है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है. जाहिर है कि वो किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में होगी. ठीक है, और फिर इसके डिफरेंट जो कॉलम होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं या फील्ड्स कहते हैं. एज एन एग्जांपल, अ पेरोल डेटाबेस विल कंटेन एन एंटिटी नेम्ड एम्प्लॉयज. द एम्प्लॉयज एंटिटी विल कंटेन वेरियस एट्रीब्यूट्स लाइक एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी वगैरह. देन है रिलेशनशिप क्या है. When the database structures grew and became more complex, a lot of data started to become redundant, which means that data was being unnecessarily duplicated. This created a need to connect data entities instead of repeating same data in multiple tables. This resulted in the creation of relationships and relational database management system. A relationship defines the connection between two tables. It creates a connection from an attribute of one entity with an attribute of another entity. 3 types of relationships can be defined between the entities. Thank you for listening.